Welcome back to my channel again. The class nalodi difference between osmosis and diffusion tani today. We are also going to study application of osmosis and diffusion. Tubga. First nalu diffusion tagi. What is diffusion? Diffusion lamidi movement of particles from higher concentration to the lower concentration imade. The analu example jinu analu diffusion gi example do. Analu ड्रॉपर नाले रेड इंक दी आना बीकर नालू दी गसिदु वाटर दुबा दे बीकर नालू दी वाटर दुबा ते आनालू तानालू दी गसिलू में रेड इंक दी लू में बदे तानी रेड इंक दी गसिबे में रेड इंक दी आनालू में दा टेस्ट 111 ई आना 2 नालू गसिबे में ता गोले बे मूव बे में आनी इंक दी गोले बे मूव बे में बदे ता 3 नालू गसिबे में दा कार अनि बिकर नानगी वाटर दी गार रेड बेथे में बदे कलर कार फर्स्ट नालू दी ड्रॉप चम्च दो बदे आने बिकर 1 नालू दी याले कलर लू दलू कलर दी रेड ड्रॉप ना दे बदे दा सेकंड बिकर ना गछि बेउ में कोले बे स्लोली स्प्रेड बेउ में दा थर्ड नालू गछि बेउ में कार बिकर नानगी वाटर दी रेड कलर नालू टर्न बेउ में तानी दी गछि बेमो तानी दी फर्स्ट नालू दी गसिबेनु ड्रॉप नालू वाटर लुई गसिलो ड्रॉप नालू कलर लुई बदे दानालू दी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज हाई concentrated है बदे आनालू पार्टिकल्स दी हाई concentrated है बदे दानी concentrated particles गसिबेउ अनि particles will start to move to lower concentration area है बदे आनालू higher to low नालू move पे नि start बेउ बदे आनबे हाई नाली लो नालू आना सेकंड नालू हला move पे नो आना high to low नालो मूव पे ता लास्ट नालो दी गसिबे इक्विलिब्रियम नालो हेउ बदे पार्टिकल्स लास्ट नालो दे तानी दी पार्टिकल्स मूव पे फर्स्ट नालो हाई टू लो नालो मूव पे अना मूव पे ता लास्ट नालो दी पार्टिकल हैज रीच इक्विलिब्रियम मदे होय तले इक्विलिब्रियम हेउ दल गसिबे द पार्टिकल्स विल स्टॉप मूविंग होय अनि बे दलो द डिफ्यूजन दी movement of particles from higher to lower concentration ni made koimo ta osmosis labge osmosis tigasimo osmosis se semi high nale low nale move pe onde bedalu osmosis the movement of water molecules from higher concentration to the lower concentration ni made da koimo ta analu yo kasime analu di box analu 1 do 2 do analu दले मिडल नालो आनी 2 box is divided गसिमे सेमी permeable membrane की डिवाइड बेनु बतेयाना बॉक्स ए दा बी दी कछि की डिवाइड बेनु सेमी permeable membrane की डिवाइड बेनु दा बॉक्स ए नालो दी गसदो सोलूट पार्टिकल्स सोलूट मॉलिक्यूल्स दो दले गसदो वाटर दो कई बी नालो या सोलूट दो वाटर दो दले मिडल नालो दी कछि की डिवाइड बेनु आनी दी सेमी permeable membrane की दा the box analysis the solid gradings do 1 2 3 4 5 do solid 5 do another 5 remember the solid another comes do 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 nimbe another 16 do 16 solid do ta sanalu the solid katelu mam do solid di binalu solid mam do bade e nalu di solid less do koi ता सोलूट मॉलिक्यूल दी अनालु लेस तो ए नालो तिबे दल गछि मामदु आनी ओपन स्पेस थोमेना आनी थोमेगा ओपन स्पेस आनी दी वाटर इमा दे गारा अनालु दी सोलूट मॉलिक्यूल्स दी 5 चम्च दो तिबे दल रेस्ट दी कार वाटर मॉलिक्यूल्स इमा दे ओइ अनालु सोलूट मॉलिक्यूल्स 5 दो रेस्ट दी गारा वाटर मॉलिक्यूल्स इमा दे तले अनालु बी नालु दी 16 do solid molecule 16 do rest the water in da water molecules khatma mi benalu definitely da to water molecules the enalu mam dubate goi enalu mam dubate water molecules the ani bedalu water will move from a to b nalu goi water will move from higher concentration to the lower concentration analu higher concentration di a nalu dubate da water gi b nalu di low dubate koi in another words
movement of water molecules will take place from low solute concentration to higher imbathianalu. Koi dele datonalu simple nalu difference between diffusion and osmosis age. The ani a the diffusion imbe and b the osmosis imbe. The diffusion the gasimu movement of particles from higher to low imade. Tanalu gamsidu 1 2 3 4 5 6 7 8 dubati anal 8 particles to. Analu gamsidu 1 2 3 terms dubati. The movement of particles will take place from anale high to low nalu movement. Higher nale low nalu higher concentration nale low nalu and the diffusion ni. The big the gasimi the analu gasidu water dubati anal water mam du ani box nalu anadi low du. The osmosis the movement of water molecules from high to low anale high nale low nalu movement anadi osmosis. The application of diffusion the smelling of ematasi dim o meme na ne imbe tele perfumes ki dim dele restaurant nale hot momo ki dim o me ania diffusion ki beodalo tele coffee ki dim o meme na ania diffusion ki tele sugar tea imbe the hot water nalu sugar dissolve be meme na ania diffusion ki water nalu salt dissolve be meme na ania diffusion ki koimo application de. Some of the application of osmosis the food preservation nalu osmosis the first the example pickle the food preservation game mati analu koimo analu apply be preservation of food nalu tale plant nalu the gachibe regulate the opening and closing of stomata koi. Third point the help cell to become rigid and provide support imbe rigid be the cell the koi tale cell to cell movement of water imbe. There are many applications of osmosis and diffusions. These are the few examples of application of osmosis and diffusion. Tuga ta datu gidel nu amchari. Please subscribe to my channel for more videos and till then thank you and bye.